ongoing LPG crisis amid the West Asia tensions, even as the government has assured that there is no shortage of LPG in the country and has urged people not to panic book cylinders. On the ground, anxiety over cooking gas supplies is clearly visible. Scenes of frustrations and long waits are now emerging from New Delhi's Mayur Vihar, where residents are struggling to get their LPG cylinders amid an ongoing supply shortage. People have been standing in queues for hours outside distribution points even after completing proper registration for refills. Many of those waiting include women and elderly residents who say that the long delays are making daily cooking increasingly difficult. Several residents said that despite booking their cylinders in advance, deliveries had not arrived on time, forcing them to come directly to the distributor and wait in line. With demand surging and supplies tightening, the situation on the group is becoming increasingly chaotic. For many families here in Mayur Vihar, a basic necessity like cooking gas is now turning into a daily struggle, with patients running thin as the queues only keep getting longer. Here's a report from my colleague Aparna Jha. Have a look. Amid escalating conflict in West Asia, people all over India have now got the fear that there can be a possible shortage in the LPG supply. I'm standing here outside one of the LPG distribution center, and as you can see in the visual, there are lots of chaos and confusion. People are panic-stricken. They are standing in long queues and waiting for their turn to refill their cylinder and also get LPG supply. Let's listen in from few people. Sir, कितने देर से आप लाइन में खड़े थे? हमें तो 1 घंटे से ज्यादा हो गए यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन आपने कब करवाया था? 7 तारीख की बुकिंग है। अच्छा, तो आपकी तरफ से सारा प्रोसेस कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है? नहीं पहुंची नहीं रहा सिलेंडर। आज आए हैं, कह रहे अब गोदाम पे जाओ। और क्या कुछ अभी फिलहाल परेशानियों का सामना करना पड़ा है? घर पे अभी है आपका सिलेंडर? नहीं, घर पे होता तो काय को सिलेंडर उठाए डोलते। खत्म है। घर पे क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी का तो ये सामना करना पड़ा जब गैस नहीं है और सरकार कह रही है कि किसी चीज की कमी नहीं है। काले बाजारी दुनिया कर रही है, सरकार से मिलकर काला बाजारी हो रही है, ये मिली भगत चल रही है सबकी। और क्या है, सरकार न्यूज पे कह रही है कोई कमी नहीं है सिलेंडर की, कहीं भी कुछ कम नहीं है। सरकार तो लगातार कह रही है कि कोई कमी नहीं है। क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है यहाँ पर? परेशानी का सामना तो सबको करना पड़ रहा है जी। गैस खत्म है, घर में बच्चे परेशान हैं, होटल में गैस नहीं है तो होटल में खाना भी नहीं मिलेगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो यही कभी कुछ जो थी गैस बना के शाम को ख़त्म हो गया। कल अभी सवेरे आकर के आधे घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, गैस नहीं मिल पा रही है और बाकी परेशानी दिक्कत तो बहुत हो रही है लोगों को। अच्छा, वहाँ पे अंदर क्या कुछ कह रहे हैं कि कब तक मिल सकता है सिलेंडर? अंदर मैं तो नहीं गया, मेरा भाई गया हुआ। देखो 4-5 दिन पहले की बुकिंग है, अब देंगे या नहीं देंगे तो वही बताएंगे। अगर मिल जाएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर होटल से कहीं से खरीद के खाएंगे। मैम, आप भी यहाँ पर सिलेंडर लेने आए हो? बिल्कुल मैडम, हम यहाँ पर सिलेंडर लेने आए हैं। हम 7 तारीख की हमारी बुकिंग है, हमें कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा। हमें 3 दिन से वो चक्कर कटवा रहे हैं। तो यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है? यही कह रहे हैं कि हाँ आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, अभी सिलेंडर नहीं आए हैं, बस यही कह के भेज देते। अभी भी इसी के लिए आई हूँ, इसलिए कह के उन्होंने भेज दिया अभी। तो जैसा कि आप बता रही है कि आप 3 दिन से यहाँ पर आ रही है, तो घर में फिलहाल सिलेंडर नहीं है? नहीं है मैडम सिलेंडर। अब बताओ, बुजुर्ग बंदा है, कहाँ जाएगा? 2 महीने बाद सिलेंडर लिया है इनसे, बताइए क्या करें मैडम? तो फिलहाल आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं मैडम? लकड़ी जला रहे हैं और क्या करें? अब लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। लकड़ी पे खाना बना। बताओ, ये कोई बात होती है? इतने दिन का सिलेंडर बुक कराए हुए, अभी तक सिलेंडर नहीं आए हैं। क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे? So as you can see that people have been forced to come here at refill center. They are standing in long queues waiting for their turn so that they could get LPG cylinder and also refill their cylinder. Also, as you can see that here people are gathered with their documents. They are waiting in line, and this is the situation at different LPG filling centers all across India. People are panic stricken. They have no clue what to do since the gas is now over in their household and they have to manage their daily course. And meanwhile, the Petroleum Ministry has moved to reassure the public amid concerns of possible LPG crunch linked to the tensions in West Asia. Senior officials from the Ministry of Petroleum and Natural Gas say that there is no shortage of fuel in the country and have urged citizens not to panic buy LPG cylinders. At a media briefing, Joint Secretary Sujata Sharma said all refineries are operating at full capacity and the country has adequate crude oil inventories. India's total refining capacity stands at around 258 million tons with supplies continuing smoothly.
The ministry also clarified that petrol and diesel are fully available at fuel stations nationwide, while CNG and piped natural gas supplies remain normal with 100% availability. More important point is whether we are able to supply LPG to the domestic consumers or not, and the answer is yes. I think that's not relevant. The important thing is the supply to the domestic consumers, which we are doing. However, officials flagged a sharp spike in LPG bookings in recent days. Daily bookings, which typically average 5 to 5.5 millions, have jumped to around 7.5 to 7.6 millions. A rise, the government says, reflects panic booking. Authorities are appealing to citizens not to stockpile cylinders unnecessarily. The government also noted that nearly 60 lakh households are close to getting piped natural gas connections and encouraged people to switch to PNG where possible to ease pressure on LPG supplies. Hamara crude inventories are very high, are in good position. Our refineries are working at 100% capacity or more. Hamari refineries की inventories are fine. So is the LPG. So LPG की shortage नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं बार-बार लोगों सभी कंज्यूमर से अपील कर रही हूँ कि जो लोग LPG से PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं वो तुरंत शिफ्ट हों. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 60 लाख ऐसे परिवार हैं जो तुरंत LNG पर PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं. उनके घर के पास में अवेलेबिलिटी है, कनेक्शन बहुत त्वरित मिल सकता है. इसीलिए कहा because we don't have the shortage of PNG. Well, even though long queues continue to form outside these distribution centers, the government is continuously maintaining that there is no need to panic by LPG cylinders and that India has abundant supply and the production of the oil refineries are at this moment at full capacity. And there is no need to go and stand in long queues. Although the situation on the ground is quite concerning, people are complaining that they have to stand in long queues and that they have booked cylinders for weeks ago but have not received their cylinders.